Dear students, today we will revise chemistry chapter wise mind map for quick revision that will be very helpful for your exams. First chapter of chemistry is chemical reactions and equations, in which the different types of chemical reactions are there. So first is combination reaction. Two or more substances combine to form a single substance. For example, 2Mg plus O2 gives you 2MgO, C plus O2 gives CO2. Second is displacement. When a more reactive element displaces less reactive element. जैसा कि मैंने क्लास में आपको कितनी बार कहा है समझाने के लिए कि जब कोई आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो आपकी चीज़ आपसे छीन लेता है। जैसे लंच कर रहे हैं आप, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपका लंच छीन के खा सकता है। इस तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें से जो है सल्फेट किसने ले लिया? जिंक ने। किससे? कॉपर से। Next reaction is double displacement reaction in which ions are exchanged. Ions exchange हो रहे हैं। जिस तरह से आप लंच में अपना टिफिन बॉक्स के जो फूड आइटम्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ exchange. And the example for double displacement is NaCl plus AgNO3 gives you AgCl plus NaNO3. So here you can see chlorine and nitrate has been exchanged by sodium and silver. Next is डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिफरेंस क्या है इसमें? जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास देन इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, सो फोटो डिकम्पोजिशन का आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag plus Br2, while in electrolytic decomposition 2H2O on passing electricity is break up or decomposed into 2H2 plus O2. So these are some examples. Now next is oxidation reaction. In oxidation reaction either the oxygen is added or hydrogen is removed. And oxidation reaction में ही आते हैं आपके Rann acidity and corrosion. These are the two examples of oxidation. Now oxidation में जो भी रिएक्शन हो रही है आपकी उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा. नेक्स्ट इज रिडक्शन. रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड. Now, there is second point, energy changes in a reaction. There are two types of energy changes in any reaction, either exothermic in which heat is released or endothermic in which heat is absorbed. And an example of exothermic, C plus O2 gives CO2 plus heat, while in endothermic, N2 plus O2 plus heat gives you 2NO. One more reaction is precipitation reaction in which one of the product form is an insoluble substance and is separated out of the solution as solid or precipitate. For example, PbNO3 whole twice plus 2Ki gives you PbI2 plus 2KNO3, potassium nitrate. Okay, so these are some type of reactions in which are given in your book. One more I want to tell you, neutralization reaction, that is in next chapter also. When an aqueous solution of an acid reacts with a base by exchange of their ions to form salt and water, this comes under acid and base chapter also, neutralization reaction. Now how to write a chemical equation? Balancing a chemical equation.
बैलेंस करना और लिखना केमिकल इक्वेशन को. सो this is all important. Any type of chemical reaction can be asked, and according to me decomposition reaction is most expected, and chemical balancing of a chemical equation practice कर लीजिएगा ध्यान से बेटा. Now steps to balance a chemical reaction. Count the number of atoms of each element on both sides of the equation. Write the unbalanced equation with the correct chemical formula for all reactants and products. Adjust the coefficients, that is the number before the formula, to balance the atoms. Ensure the coefficients are in simplest whole number ratio, not in decimals. Check for balance to ensure all atoms are balanced. Now there are few examples. CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O. This is already balanced or not? Here you can see H2O. Here we have to write 2H2O. Second is Na plus H2O gives you NaOH plus H2. Again you need to balance here. So the answer will be 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. Third example is Fe2O3 plus HCl gives FeCl2 plus H2O. So here HCl is not balanced. So 6HCl gives 2 FeCl2 plus 3H2O. Next example, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. Now you can see it is also not balanced. So 2C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2. Similarly, you can balance all the equations. Now, one more is there, factors causing Ren acidity. तो इसमें temperature, duration, oxygen, light, microorganism and moisture. All these factors are responsible for it, for causing the decaying of food, decomposition of food items. So coming to next chapter, acid, bases and salts. Now what is acid? एसिड वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन फॉर्म करने के लिए, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्साइड आयंस जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. So acids are corrosive and it converts blue litmus to red. It is so in test and give hydrogen plus ions. Now, what about bases? The physical properties of bases, they are soapy in touch, they turns red litmus blue and bitter in taste and give hydroxide ions. Now, indicators. What are indicators? Indicators indicates whether a substance is acid or base. So there are two types of indicators, natural and artificial, and you can check by pH scale also. Now the classification of acids are strong acid, weak acid, organic acid and mineral acid. Strong acids get completely ionized in water. Weak acids get ionized only very small extent in water. Organic acids occur in plants and animals, while mineral acids derived from minerals present in Earth's crust. Now, the properties, strong bases and weak bases. Classification of bases are two. Strong and weak. The bases which completely ionizes to give hydroxide ions are termed as strong bases, while which ionizes to only some extent in water to give hydroxide ions are weak bases. And you can see the indicators in table: red litmus, blue litmus, red cabbage juice, phenolphthalein, methyl orange, onion and vanilla. So onion and vanilla is olfactory indicators,
and you can remember what they do while testing the acid and base. Now about some salts. First is common salt, that is NaCl. NaCl नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, KCl, Na2SO4, Na3PO4, ये सारे नॉर्मल सॉल्ट्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कि CaOCl2 केमिकल नेम है. एंड नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, washing soda, Na2CO3, 10H2O, and plaster of Paris, CaSO4, half H2O. In next slide, we will understand the uses of all these salts. Now we will revise some more important points about salts. Sodium chloride. NaCl is also known as common salt, and its main source is sea water. Sea water को हीट करने के बाद इवापोरेट करने पर हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, and it is used as a seasoning and preservative in food items. It enhances flavors and prevent spoilage in pickle and curd meats. Now, it is also used as a raw material for producing various chemicals including sodium hydroxide and chlorine gas. Next salt is sodium hydroxide. It is also known as caustic soda. Its chemical name is NaOH. Sodium hydroxide is a strong base, and it is obtained by electrolytic decomposition of solution of sodium chloride by Brin process. So the reaction is 2NaCl plus 2H2O on passing electricity gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. Now chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at cathode, and the process is known as chlor-alkali process, where chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. And it is very important for year 2026 board exam. Sodium hydroxide is used for degreasing of metals, manufacturing of paper, soap, detergents, artificial fibers, bleach powder, etc. Next salt is baking soda, sodium bicarbonate, and chemical formula is NaHCO3. Baking soda is another important product which can be obtained using byproduct of chlor-alkali process. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, or sodium bicarbonate. It is also known as bread soda, cooking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarb, etc. Baking soda is obtained by the reaction of Brin with carbon dioxide and ammonia, and this process is known as Solvay process. An industrial method to obtain is NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, and it gives NH4Cl plus NaHCO3. And lab method for manufacturing of this is Na2CO3 plus CO2 plus H2O gives 2NaHCO3, and it is used in baking powder to help the dough rise by releasing carbon dioxide when heated. It is also used in medical purpose. It acts as an antacid to neutralize stomach acid and relieve indigestion. Next salt is washing soda. Sodium carbonate. Its chemical formula is Na2CO3. The preparation of washing soda involves several steps, starting from sodium chloride salt through the Solvay process, and the process or preparation involves following steps. First, formation of baking soda.
then thermal decomposition and then recrystallization. तो थर्मल डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है वो क्या होगी 2NaHCO3 and it gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O. It is also important for the exam purpose. Then recrystallization, in which the anhydrous sodium carbonate is dissolved in water and recrystallized to obtain washing soda. Now it contains 10 water molecules of crystallization. And the equation is Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 10H2O. And it is used for various purposes like softening the hard water, for washing and cleaning, and also employed in glass, soap and paper manufacturing industries. Now, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, what is water of crystallization? तो बच्चों बहुत सारे सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं. अब जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सॉल्ट में उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो नेक्स्ट salt is bleaching powder, that is calcium oxychloride. Its chemical formula is CaOCl2. The preparation of bleaching powder involves the reaction of chlorine gas with dry slacked lime, that is calcium hydroxide. And the reaction is CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. That means it is producing calcium oxychloride, which is a bleaching powder. The bleaching powder is then dried and stored in airtight containers to prevent it from reacting with moisture in air. It is used for water purification and as a bleaching agent in textile industries. Next salt is plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate. Its chemical formula is CaSO4 dot half H2O. Plaster of Paris is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin, approximately 100 degrees Celsius, resulting in the formation of calcium sulfate hemihydrate, that is CaSO4 half H2O. जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O. उसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे और जिसमें 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर वेपर. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ plaster of Paris involves the chemical reaction, that is CaSO4 dot 2H2O on heating at 373 Kelvin gives CaSO4 dot 21H2O plus 1.5 H2O, that is in vapor form. It is used in making cast, sculptures and as a building material. In medical field, it is used in hospitals for setting fractured bones. I hope it will help you a lot in your exams. Now next chapter is metals and non-metals. The physical properties of metals are, they are electropositive, lustrous, malleable, ductile, good conductor of heat and electricity, and all metals are solids at room temperature except mercury. Non-metals physical properties are, they are electronegative, non-lustrous except iodine and graphite, non-malleable, non-ductile, and bad conductor of heat and electricity. Non-metals have low melting and boiling point. Non-metals are solids or gases except bromine, that is liquid form. Now, the third form is metalloids. Metalloids possess properties of metals as well as non-metals. For example, germanium and gallium. Now, you must remember the activity series of metals. This is very important. So, the most reactive element is
potassium, then sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, and gold. And the least reactive is gold. That's why jewelry is made up of gold. Now let us compare the chemical properties of metals and non-metals. That is very, very important. Metals react with oxygen to form metal oxides. Metals reacts with water to produce metal oxide and hydrogen gas. Metal reacts with chlorine to form ionic metal chlorides. Metal reacts with dilute acid to form a metal salt and hydrogen gas. Only a few metals like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen to form metal hydrides. While in non-metals react with oxygen to form acidic oxides. Non-metals do not react with water, do not react with dilute acid. Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. And non-metals react with chlorine to form covalent chlorides. Now, about corrosion. What is corrosion? Now you can see why does copper turns green? Because copper is attacked by moist air containing CO2 to form hydrated copper, carbonate, CuCO3, CuOH whole twice. Now why does silver get tarnished? Silver react with hydrogen sulfide forming hydrated silver sulfide, and these phenomena is known as corrosion. Now the steps involved in extraction of metals from their ores. When the metals of high reactivity series is there, then electrolysis of molten ore is done and then you can get pure metal. Now metals of medium reactivity, अब इसमें दो तरह के होते हैं, कार्बोनेट और या सल्फाइड और. कार्बोनेट और कैल्सिनेशन के द्वारा और सल्फाइड और रोस्टिंग के द्वारा देन ऑक्साइड ऑफ मेटल के फॉर्म में आएंगे, रिडक्शन to metal and then refined to pure metal. Metals of low reactivity contain sulfide ore and roasting is done to get metal and then it is refined. The most important and last chapter of chemistry is carbon and its compounds. Carbon is having versatile nature and its properties are very different from any other element. It is tetravalent, that is its valency is 4. It has 3 allotropes, diamond, graphite, Buckminster fullerene, that is C60. It is having catenation property, that is self-linking unique property. And it is tetrahedral, that is central carbon atom always form covalent bond creating bond angle of 109.5 degree that you can see in figure. Now there are different types of hydrocarbons. Some name of hydrocarbons are saturated and unsaturated, in which alkane, alkene and alkyne are there. Now alkene, alkane and alkyne के जो IUPAC नेम है उसमें क्या होता है, एल्केन का जो नाम है, जैसे सपोज any name you can take, then you can remove ane and add ene. If you want to convert it into alkyne, that is means triple bond, then नेमिंग में आप क्या करेंगे, ane के प्लेस को रिप्लेस करके yne. Okay, so these are some of the names of functional group by which you can add or change. Just suppose carboxylic acid, alkane है, उसको अगर कार्बोक्सिलिक में करना है तो ई की प्लेस पे ओइक लगा देंगे हम. कीटोन है तो ONE सफिक्स में हम ऐड कर देंगे, एल्डिहाइड्स में सफिक्स में हम AL ऐड कर देंगे, अल्कोहल्स में OL ऐड कर देंगे. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. एंड हैलोजन एल्केन्स जो हैं उसमें जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें हम एक्स के प्लेस पे हेलो, हम इसको प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे, क्लोरो एल्केन या फ्लोरो एल्केन लाइक दिस. एंड ईस्टर एल्काइल एल्कोनेट, alkene, nitrile, alkemide. These are some other examples.
Let us discuss the steps involved in naming carbon compounds. First of all, identify the number of carbon atoms present in it. Determine the base name for the compound based on the number of carbon atoms present in longest continuous chain. Suppose there are 3 carbon atoms, then its name will be propane. Now identify the functional group and add prefix or suffix depending on the functional group present in it. Suppose the compound consists with carboxylic group, then we will have to add suffix carboxy. Next step is change the ending from "-ine" to "-ine" or "-ine" to "-ine" depending on the double bond or triple bond present in it. Now you can name the compound. First, if it is given CH3CH2OH, तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है कार्बन एटम की, कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटा? 2. तो नेक्स्ट स्टेप में फंक्शनल ग्रुप पूछेंगे. फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH. OH किसका है? अल्कोहल ग्रुप. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल. और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें, देखिए पिक्चर में. फर्स्ट जो है उसमें देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल? 5. एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप है Br, दैट इज ब्रोमो. एंड अब देखिए कि किस नंबर पे, अब नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन एटम को हम फर्स्ट नंबर देंगे, 1 देंगे. ओके, तो इट विल बी 1 ब्रोमो पेंटेन. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो ब्रोमो था वो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम के पास चला गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन. अब थर्ड पे देखिए, ये कार्बन एटम्स 5 ही हैं, लेकिन ये अब इसने पोजीशन चेंज कर ली है, ब्रोमो ने, ये पहुंच गया अब थर्ड कार्बन एटम के पास, तो इट विल बी 3 ब्रोमो पेंटेन. सिमिलरली इन फोर्थ एग्जाम्पल, now you can see there is one more functional group, that is CH3, that is methyl group. अब इनकी नेमिंग कितनी हो जाएगी? फिर 4 ही कार्बन एटम बचे हैं, क्योंकि फोर्थ जो है 4 बचे हैं, 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो था वो मिथाइल में फॉर्म हो गया है. तो 1 एक ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो गया. तो हम स्टार्ट करेंगे. ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन एटम्स है लॉन्गेस्ट चेन में, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल butane. The chemical properties of carbon compounds. First is combustion, burning of carbon compounds in air. Substitution means replacement of an atom or a group of atoms in an organic molecule by another atom or group of atoms. Addition, combination or sum of two reactants to form a single product. Oxidation में जैसे पहले भी बताया है, addition of oxygen होगा. Now, there are 2 most important things that you have to remember. Everything that is given in NCERT about ethanol and ethanoic acid. Ethanol is a colorless, distinct smell, burning taste, soluble in water in all proportions, neutral to litmus. Reaction with sodium, 2CH3CH2OH plus Na. It gives CH3CH2ONA plus H2. Reaction with concentrated H2SO4, CH3CH2OH in presence of concentrated H2SO4, you can see C डबल बॉन्ड C, HH लगाए हुए हैं दोनों साइड और प्लस वाटर. नाउ कंबशन में क्या होगा? इथेनॉल जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऐड किए जाएंगे उसमें, एंड देन 2CO2 प्लस 2H2O प्लस लॉट ऑफ हीट इज रिमूव्ड. सिमिलरली इन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या है? कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, ये सॉल्युबल है वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में. नाउ रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, सो इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स यू 2CH3CONA plus CO2 plus H2O. Reaction with sodium hydrogen carbonate, CH3COOH plus NaHCO3 gives CH3COONA plus CO2 plus water. Now
Next is hydrolysis and esterification. These are the most important reaction asked uh, almost every year. CH3 C double bond OH plus HOCH2 CH3 in presence of concentrated H2SO4 and heat is it gives CH3 C double bond OCH2 CH3 plus water. And in hydrolysis, in presence of sodium hydroxide, it gives C2H5OH, that means ethanol, plus CH3COOH. And next is about soaps and detergent. Please don't get mix them. बहुत से बच्चे सोप्स और डिटर्जेंट को मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं. सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट को लॉन्ग चेन अगर लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो साबुन बनता है, सोप बनता है. इट इज COONA. Not suitable for washing purposes when water is hard. While detergent, sodium salt of long chain benzene sulfonic acids. The ionic group in a detergent is SO3Na or SO4Na. It can be used for washing even when the water is hard. That means salt water. Now conversion of ethanol to ethanoic acid. Reaction contains CH3CH2OH plus 2H2O, alkaline KMNO4 और acidified K2Cr2O7 जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, and it gives ethanoic acid. Now mechanism is, you can see the mechanism in this reaction. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ है, एंड देन इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड. So this question can also be asked in the board exams. Now some key tips for preparing chemistry. Study each chapter using 5-step method. First, read the NCERT line by line. Mark all the definitions, reactions, conditions like heat, catalyst, electricity. Then learn all the examples given in NCERT. Most board questions come directly from NCERT textbook. Step 2, make short, smart notes including definitions, key points, uses, properties, flowcharts, especially in carbon chapters and metals, non-metals. नाउ अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स. पैराग्राफ नहीं, पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट्स यूज करनी है, प्रॉपर हेडिंग देनी है. नेक्स्ट स्टेप इज मास्टर केमिकल रिएक्शंस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल में ज़रूर लिखना है. पूछा है या नहीं पूछा है, still you have to write all the word equation, balanced chemical equations, types of reaction. Practice writing reactions daily. Always remember correct formula, balancing, state symbols. Now next is, if any numericals are there, please practice them. Follow the format given to find formula, calculation and answer with the unit. And step 5 and the last step is revise all the diagrams and flowcharts. Practice them, especially of electrolysis of water. अब मैं बताना चाहूँगी कि चैप्टर वाइज कैसे फोकस करें, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करें. तो फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग इक्वेशन परफेक्टली आना चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, और डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड रेन एसिडिटी. एंड देन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कॉमन सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, उनके यूजेस, प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड पीएच स्केल और इंडिकेटर्स पे ऊपर क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपके दोनों के डिफरेंसेस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन. कैसे पेंट करके, गैल्वनाइज करके कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल्स को. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सबसे हाईएस्ट वेटेज है, उसमें फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज. नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स आएगा.
इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस हर साल रिपीट होती हैं, आइदर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सो रिमेंबर देन प्रॉपरली और इस चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा फोकस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe.